Hello guys, this is Amir Shamsi and welcome to DYL classes. Guys, in previous lecture we have seen syntax of our C program, that how our C programs looks, and little bit about header files. Guys, in this lecture we are going to start our first C program, and trust me guys, this lecture is going to be really very simple. So let's get started. In the first line we will write our header file. गाइज मैंने आपको बताया था हमारा stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो हेडर फाइल है, इसलिए इसको .h एक्सटेंशन की फॉर्म में लिखते हैं, और हैश इंक्लूड इसलिए क्योंकि हमें इस हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शन जो है सी प्रोग्राम में अपने सी लैंग्वेज में इंपोर्ट करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड लगाया, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट लगाया यहाँ पर। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन आ जाएगा और इसकी बॉडी, इसमें गाइज मैं लिखूँगा प्रिंटफ स्टेटमेंट। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है गाइस, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो हेडर फाइल हमने ऊपर यूज़ करी है, stdio लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ stdio.h का लाइब्रेरी फंक्शन होता है ये। And guys, that's all. Our first program ends here. So let's run it. Okay guys, first of all we have to open our code blocks. Guys, I have shown tutorial how to install code blocks. If you haven't installed yet, then please install your code blocks. You can also press shortcut keys Ctrl Shift N for creating new file. And guys, remember one thing, before doing coding we have to save our file. Let's name it my first program. Okay guys, I am going to write the same thing which I have shown you. Hash include stdio.h. Here starts our main function and curly braces, and that's my printf statement. This is Amir Shamsi. You can write anything between these inverted commas, and don't forget to apply the semicolon after your line. And guys, that's all. We are going to run it. First of all, we are going to compile our program. Compile. You can see it. Now we are going to run it.
See guys, this is Amr Shamsi is printed on our screen. Now I am going to write another printf statement. Printf welcome to develop classes. Okay guys, semicolon. Now again compile it, run it. You can see guys, this is Amr Shamsi, welcome to develop classes. But guys, I have written welcome to develop classes in the next line, but it is printed on the same line. To avoid this problem, we will use /n /n. गाइज ये कंपाइलर को जो है नेक्स्ट लाइन में ले आएगा. अब इसको फिर से एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं. Run. See this. This is Amr Shamsi and welcome to develop classes printed on the next line. You can guys, you can also write /n before welcome. Let me show you. You can also write here /n. Compiler पहले this is Amr Shamsi पड़ेगा, फिर वो देखेगा /n, नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, फिर वेलकम टू develop classes को प्रिंट कर देगा. और इसका एक और मेथड है, पहले ये कंपाइल करके देख लेते हैं. See this, the result is same. इसका एक और मेथड है, वो भी करके देख लेते हैं. मैं एक और printf स्टेटमेंट लगा देता हूँ. डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसमें खाली /n लिख देता हूँ और सेमीकोलन. Result will be the same. This is Amr Shamsi and welcome to develop classes. So guys, आपने देखा /n का मतलब. यहाँ पे कंपाइलर जो है दिस इज Amr Shamsi पड़ेगा, फिर /n देखेगा printf स्टेटमेंट में, नेक्स्ट लाइन में ले आएगा कंपाइलर को, और वेलकम टू develop classes को. Guys, this is our first program, and in the next lecture I am going to show you little about constants and variable, and it is also a good topic. So thank you guys for watching this video, and don't forget to subscribe my channel for regular updates. Thank you. Take care.